when I started my meditation. My father Okay. was very good in spiritual world. He was doing a lot of meditation, and I have seen them. It's not only that I am in this path. I'm in the technical world. So Just for free के on how to improvise. tools is a way to express the things. It's Hmm. just a way. So sometimes I use it. Hello and welcome to V Talks. Today is going to be yet another magical episode. And magical why? I say this because I have a person with me who is not only a maker of leaders but also a powerhouse of NLP training, technical blogging, tarot, vastu, and lots more. I am very pleased to welcome with us here today Mr. Vinay Tripathi. Mr. Tripathi, welcome to the show. Thank you for onboarding me, Kumar. Thanks everyone. थैंक यू फॉर बीइंग हियर विद अस टुडे। अब इससे पहले कि हम इस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएं और हम हमारी जो ऑडियंसेस हैं जो आपकी इंट्रोडक्शन सुन के ऑलरेडी इंटरेस्टेड हो गई है इस बात पे आगे बढ़े, आप हमें एक चीज बताइए। ये तो मैं पर्सनली भी जानना चाहती हूँ कि आप इतनी सारी चीजें मैनेज कैसे करते हैं। I will say discipline and your passion towards your work, your society, and the people. Definitely, it's tough game when you are, at 40s. You have a lot of responsibilities towards your family, towards या society. So definitely, I'll say discipline is the key for for managing everything, and your passion towards things, your passion towards society, the people हम्म। you want to help. You have to pay for that. You have to do a lot of राइट। effort. People see a lot of glittery things, but they don't understand how much pain behind of that. वेरी So ट्रू। life is life is not a bed of roses. We see only the smiling faces, but not the राइट। depression behind it. हाँ, वैसे आप मुझे कुछ देर पहले ही बता रहे थे कि आपने काफी पढ़ाई करी है, काफी रिसर्च एंड ऑफ कोर्स एक्सपर्टीज है आपकी वास्तु में। और ये जो आपकी जर्नी है ये काफी इंटरेस्टिंग रही है। तो पर ये जर्नी की ना हमेशा कोई शुरुआत होती है, हमेशा कोई ऐसी चीज होती है जो लाइफ को चेंज करने वाली हो जाती है और उसके बाद इंसान पूरा एक डिफरेंट जर्नी की ओर चला जाता है। तो ये जर्नी की शुरुआत आपके लिए कैसे हुई, ये हमें बताएं। तो कोमल, आई विल से कि ये जो है फैमिली से ही कुछ आता है. So this is जी। something I didn't remember from when since when I started my meditation. My father ओके। was very good in spiritual world. He was doing a lot of meditation, and I have seen them. So मुझे याद है 3-4 साल की उम्र में it's like I started doing meditation. I was actually working on my Agya chakra, and हम्म। did very intense meditation. So I understand energy actually. So and the core concept, even though I'm like a BTech engineering graduate, so it's not only that I am in this path, I'm in the technical world. So जी। even though the journey started, which was in the childhood, from the energy, experiencing those energy through meditation, through nature, and the same thing I experienced with science also. And after that, I understand there should be some interlinking between the technical world or current physical physics world and the metaphysics, which we are talking about the astrology. So this is राइट। something you can say from since I started a lot of books, lot of Vedas, Upanishads, Ramayana, Mahabharata, which is actually normal. You can see in यस। a normal Brahmin families, and then started to understand this what you can say planets and their energies. हम्म। So and after that, after engineering, my wife actually used she pushed me a lot to do something because she normally used to say, "You have so much knowledge, why you are not helping to people?" So राइट। then after, I did some professional courses over there. I did a master's in tarot, then I did masters in Vastu Shastra, reading like a lot of, you can say Indian scriptures also based on it, Vishwakarma Prakash, हम्म। Mayamatam, Samranga Sutradhar. So working on वाह। those things
actually. It's a amalgamation of technology, science, and astrology, and it gives me a lot of enjoy also. And trust me, Right. I actually love it. I actually Nice. love it. वैसे मैं तो कहूंगी कि काफी डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है जब हम साइंटिफिकली एक बात पे तो रहते ही हैं, जैसे कि आप अपने काम में जैसा सारे यूज करते हैं, बट हम जब मेटाफिजिक्स या दीज दीज साइंसेस, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, वास्तु, हम इसको जब लेकर आते हैं और इसको हम मिक्स करते हैं हमारी प्रैक्टिकलिटी के साथ, तो मैं कहूंगी कि बहुत ही अच्छा और डेडली कॉम्बिनेशन है टू टैकल एनी ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट कम इन लाइफ। और स्पीकिंग अबाउट प्रॉब्लम्स, मुझे पता है कि आपने काफी सारे लोगों को हेल्प भी करा है, काफी सारे लोगों को एडवाइजेस दी है जस्ट फॉर फ्री के ऑन हाउ टू इम्प्रोवाइज एंड टूल्स जो वो यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो ये मतलब ये जो टूल्स हैं इनके बारे में थोड़ा बताएं, और आपका जो एक्सपीरियंस रहा है टॉकिंग टू पीपल उसके बारे में बताइए। So, when you have tools, so tools is a way to express, the things. It's हम्म। just a way. So sometimes I use tarot as a tool. Sometimes I use a vastu as a tool. Sometimes I do numerology. Sometimes I do, this palmistry. So I have done a palmistry like 10, 15 years when I was studying. It's an easy way, to to get attention. So in school time, definitely. But yes, every tool is working fine. You हम्म। must be expertise and you must have to understand actually. And what is the हम्म। understanding? You understand the energy, you understand the planets, you understand the human psychology and the behavior. Why someone is doing this. So I'll give you an example. If someone is, you know, someone is not feeling much more confident, he is less confident राइट। and is very shy. So I can, rectify that problem multiple ways. If he is having a problem and in a confidence, what I will do, I'll go and check his in house in south southeast corner. There will be some issues. Make that balance, and definitely this changes will impact their subconscious mind. It is all about the story of improvising your subconscious mind. Till the राइट। time you are working on the conscious world, राइट। you are actually seeing what you are seeing, but the subconscious mind is actually the energy around you. When we are करेक्ट। fixing those issues, what happens? It improvises things in a drastic manner. So that is what and the same way I'll say if I'll see okay someone the similar problem. So I can say also okay do one thing just give water to the sun. So what sun does giving when we are giving the water we are actually taking the sun bath the sun करेक्ट। thing. And that energy, the sun energy is actually giving you some much, some confidence. It is actually enlightening. It is giving you some more, awakeness. So राइट। what happens? Your sun, the element of sun is getting increased in your body. If करेक्ट। I'll go to the gemology, I'll say, okay, you just be a ruby kind of, element. So a single problem can be sorted with anything because this is all the energy. You have to balance that energy. You are हम्म। balancing it for which way it depends upon the people to people, person to person, the ऑफ person who's कोर्स। coming to you and the person who's giving you the results. तो आई थिंक हम ऐसा कहेंगे तो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा कि जैसी प्रॉब्लम वैसी दवाई। एंड और अगर Definitely. अगर इसे सही तरह से हम यूज कर सकते हैं, अगर हम इसे सही मात्रा में एंड इन द करेक्ट मैनर, जैसे कि आपने अभी बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से मुझे समझाया अबाउट द सन बाथिंग, सन बेदिंग थिंग, जो आई डोंट थिंक कि बहुत लोग एक्सप्लेन करते हैं। लोग सिर्फ एक सोल्यूशन दे देंगे कि आप ये करिए या आप जल चढ़ाएं और इससे आपका ठीक हो जाएगा। तो काफी लोगों को कैसा रहता है, उनकी साइकी में वो चीज बैठती नहीं है। सो आई थिंक उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा हो सकता है। एंड उसी तरह से मतलब जैसे अगर हम इस चीज को हमारे डेली लाइफ में यूज करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स ला सकते हैं, राइट? बट इसमें मेरा सवाल ये है कि इसमें जैसे आपने बोला कि जिसे जो काम आता है मैं वो ट्राई करता हूँ, पर ये सारी चीजें अलग अलग है, राइट? और सबके इफेक्ट्स भी अलग अलग होते हैं, करेक्ट? अगर आप उसके देखिए बारे में थोड़ा बताएं, जैसे देखिए क्या है, हम्म। बस हाँ
मैं समझ गया कि आप कहना चाह रहे हो कि वास्तु का या जी, देखिए एक चीज ऑकल्ट बताता का हूँ या एस्ट्रोलॉजी का कौन से अलग अलग है या इंटरलिंक्ड है ये सारे? this world is totally wrong way. It's nothing that anything has changed. You have राइट। to only balance your five elements. हाँ। You have to balance five elements. You are doing it through the gems. You are doing through it, placement of your house energy. You are राइट। doing it through the meditation. You are doing it through by any means. So, हाँ। and in a very simple example, if someone's son is a very bad situation, if he is not doing anything, he is just touching the feet of his father, his or राइट। like his father. That will also improve his son. राइट। So it's all about the energy, the five elements. You have to balance it. You are balancing it in your home. Definitely, what will be happen? The subconscious mind will allow you to do all those things, which is actually improvising your stuff. So, राइट। so what happens when you or if you are not getting any opportunity, your north is हम्म। actually weaker part. So हम्म। definitely, if you do the clutter-free things on north, what happens? It allows you much more opportunity. Your हम्म। what you can say, this Mercury, who's the lord of the north, it will या। actually improvise automatically. Or you can do some donations and temple like this what you can say green lentil to the Lord Shiva or Lord Ganesha. That will also improvise the same thing. So everything is having somehow interlinked. The only thing that the medium you are doing it, that is only the thing which actually you can say help you on that राइट। journey. राइट। और नाउ कमिंग बैक टू आवर नेक्स्ट बिग डिस्कशन फॉर दिस सेशन टुडे, आई एम श्योर जो हमारे व्यूअर्स वेट कर भी रहे हैं, इज वास्तु। और आपने वास्तु में काफी पढ़ाई करी है, आपकी काफी एक्सपर्टीज भी है इस चीज में। तो अब वास्तु शास्त्र एग्जैक्टली exactly क्या है? क्योंकि काफी लोगों के काफी एक्सप्लेनेशन होते हैं ऑब्जेक्ट रिलेटेड और जैसा कि डायरेक्शन रिलेटेड, लेकिन आपने बताया दैट एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड विद एनर्जी। तो ये जो हमारे आज की मॉडर्न बिल्डिंग्स बनती हैं, इसमें ये कितना मायने रखता है? हाउ सिग्निफिकेंट इज दिस इन टुडेज एक्चुअली अगर मैं देखूं वास्तु का टाइम? आज की आर्किटेक्चर के हिसाब से, इवन दो आप पुराने आर्किटेक्चर देखिए, उन्होंने एक एक चीज का हिसाब किताब रखा होता हम्म। है कि कैसे कमरे होने चाहिए, कैसे हम्म। चौखट होनी चाहिए। जैसे आजकल हम लोग चौखट नहीं लगा रहे हैं, कैसी हाँ। पहले की आप कोई भी घर देखिए वहां पर चौखट है। तो हुँ। आर्किटेक्चर बहुत आप उन्होंने क्या किया, साउथ को बहुत साउथ की दीवार को मोटा रखा। क्यों? राइट। बिकॉज ये फॉलो द सन पाथ, सन कैसे निकल हुँ। रहा है उसकी पूरी पाथवे को वो देखते थे। उसके हिसाब करेक्ट। से वो क्या करते थे, वो अपनी आर्किटेक्चर को बनाते थे। उनको वो क्यों कहते हैं कि आप मेडिटेशन जो है नॉर्थ ईस्ट मत करें, क्योंकि जिस टाइम पे आप मेडिटेशन कर रहे हैं उस समय सूर्य नॉर्थ ईस्ट में होगा। जिस टाइम पे हाँ। आप रसोई बना रहे हैं उस समय आपका सन जो है साउथ ईस्ट में है। हुँ। because they know the sun energy, they know राइट। that this energy will help you. So उनका जो पूरा आर्किटेक्चर था वो सन पाथ के हिसाब से था। तो इसलिए नॉर्थ की दीवारों को हल्का बनाते थे। साउथ में सन बहुत देर तक रह रहा है, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, तो आप क्या हुँ। करोगे, आप वहां की दीवारें मोटी बनाओगे, अल्ट्रावायलेट रेस से बचाएंगी, वो आपको आपके कमरे को गर्म होने से बचाएंगी, राइट। तो करेक्ट। मॉडर्न आर्किटेक्चर हो या ओल्ड आर्किटेक्चर, वास्तु इज एक्चुअली वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टूल टू manifest life in a proper way. If you are not following the rules, definitely it will give you a harm. Some people are saying, no, no, we are not living Vastu auspicious homes and this is working fine. I have seen this thing. करेक्ट। Trust me, after some time, sometimes you are in a very strong position, like, 20 years, a man can say that, okay, I'm eating anything and nothing is going to get. That's करेक्ट। perfectly good. But after 40 years, what is happening? Because you didn't follow the discipline, you are on the bed. या। So understand those things in a larger context rather than just the current context. So हुँ। I will say that whatever the architecture design through the Vastu has a great impact on the human life, and that is what the Indian society, Indian architects are actually doing great, and they have done a great to improve the human's life. They, राइट। they
their target is not only to get the money, their target is to live life in a proper way. Hmm. So your health should be perfect, your Yeah. thought process should be perfect, your family should be perfect. So that is what they are saying that okay, go and live in the southwest, meditate into the northeast, foods on Yeah. the southeast because there is a fire energy over there. And for sitting or doing all those things for the social connectivity, go for the east direction, create a drawing over there. Hmm. So that is what they have designed everything in this राइट। अब इससे आई कम टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो ये है कि जैसे कि अगर कोई घर लोग रीअरेंज करते हैं एज पर वास्तु, या फिर पीपल आर मेकिंग द हाउसेज एज पर वास्तु, इससे जो चेंजेस होते हैं, आप इसके बारे में थोड़ा बताएं कि हमारी लाइफ में किस टाइप की पॉजिटिविटीज आ सकती है। बिकॉज बहुत बारी लोग ऐसा भी सोचते हैं कि हमने तो ये एज पर वास्तु रखा है, लेकिन हमें चाहिए वैसा कोई चेंज हमें नजर नहीं आ रहा है। तो आई अंडरस्टैंड दैट वो एक एनर्जीज का कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, लेकिन ऐसी कौन सी सिग्निफिकेंट चेंजेस होती हैं जो इमीडिएटली पता चल जाती हैं एज सून एज हम वास्तु के हिसाब से सारी चीजें रखते मेरे कस्टमर थे, लेट मी आंसर इन वेरी प्रैक्टिकल वे। हैं। या। तो मेरे कस्टमर थे, तो उनको मेरा नंबर जो है मेरे फ्रेंड ने दिया, एंड ही इज वन ऑफ माय डियर इंजीनियरिंग फ्रेंड, so he knows me, so he gave him so they came from Chennai and they don't believe on those. But what ओके। happened when they came to this house, her husband was like totally ill, like he was not able to stand up by on his own feet. हम्म। That lady called me, and that lady said to me that Vinay ji, ऐसा ऐसा हो गया, हम जब से यहाँ आए हैं तब से ऐसा हो गया, और she actually did। तो मैंने सिंपल कहा अगर ऐसा हो गया, और उसने एक दो इश्यूज मुझे और बताए। मैंने कहा कि कौन भी, मैंने बोला कि आपके साउथ वेस्ट में कुछ इशू है या साउथ साउथ कुछ इशू। और उनको एक्चुअली जब से उनका मेंटल ब्लॉक इतना हो गया था, एंड दे वर एक्चुअली वेरी you can say they were actually entrepreneurs, they were doing great and they earn a lot in that way. So it's not that someone who's actually very old thought of school. They were new, and the guy is graduated from the IIT. So I've been there and I've seen him. When I found that the house entry is south southwest, and I said, sorry, ma'am. This is something which can't be cured. You have to leave the house. I'm very honest. I'm not saying I don't say. Even though I have done some remedies, it will give you some impact. या। So some improvements happened, and then they left the house. And after 10 days, they again called me, and they said that her husband was working fine. Now he's traveling, and वाओ। that yeah, that lady said to me that I am feeling very positive over here. Things are going good, and I did some vastu over there and balancing their energies over there. So sometimes it seems to be very quick because very major issues are there and can be cured in that way. Sometimes some processes take some time. So I'll say have patience, work accordingly how the your Vastu consultant is telling to you. It's he does some work over there, right? It's not like that he just came to you. Just trust या। and ask some explanation also why you are doing हम्म। this, या। which kind of energy you are improvising, and what is your expectation. So most of the time when I meet my friends and the people, lot of businessmen, entrepreneurs, and normal people, so I ask them, what actually do you want, what your manifestation is, what you want to improve the business, health, career. या। So I think also all this because what happens these days, people want something very specific. I want results on this area. या। So doing Vastu in normal way, plus improvising those areas, enhancing those elements, those energies, which is actually, you know, uh, you can say giving more results. So placing करेक्ट। the remedies over there, 3D remedies, very rare. It's in a very rare cases we suggest that okay you leave house or something because entry of your house is something which is very important. So your entry of your house, your Brahmasthan and the northeast, these your kitchen you can say these three four या। things are very important.
So if any problems in your entry, your Brahmastan and your northeast, moreover on that cases, I suggest people, if possible, leave the house or something. We हाँ. do remedies also over there, but the chances are a little bit less. Apart from that, I think everything is cured, manifested, no issues over there. People do a lot growth. I have seen a lot of southeast entry people. They हम्म. are aggressive because it's a fire zone. We did remedies and it worked very fine. So Yeah. yeah, हमारे जो व्यूअर्स हैं, आई थिंक आपकी बात सुन के उनके दिमाग में वही चल रहा होगा जो मेरे दिमाग में चल रहा है, क्योंकि आपने एक दो इंस्टेंसेस हमें बताए हैं जहाँ पे ये मिराक्युलसली काम किया है. डू टेल अस सम टिप्स और मे बी सम ट्रिक्स जो हम इजीली अपने लाइफ में यूज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वास्तु, अपने घर पे चेंज कर सकते हैं इंस्टेंटली, जो हमें ओवरऑल बेनिफिशियल हो सकता है. अ, मैं एक चीज कहूंगा, सबसे पहली चीज है अपने घर को क्लटर फ्री करो. One हम्म. of the one of the biggest remedy for any clutter free your house. क्लटर हम्म. के लिए केवल एक जगह होती है, वो है साउथ साउथ वेस्ट, विच इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्पोजल. सो ओके. अगर क्लटर रखना है तो उस साइड क्लटर डिस्पोज ऑफ होता है. Apart from that, every 2 3 months, at least if you are not doing vastu also, clean your house. Do करेक्ट. some movement. So there are astrological aspects also. So गोचर का परिवर्तन होता है, वो सारी चीजें होती है, तो उसके लिए भी है. Apart from that, uh, I'll give you some basic tips. So when you want to do the opportunities, you want to job new roles and something, focus on your north area. Do not put any anti-element thing. So north is the water element. Blue color. ओके. Do not ओके. place, red color over there. Do not place yellow color over there because it's anti-element. So they will disturb your energy. And you want a new job, you want a new role. So if you are putting all those things, what will happen? It will disturb your things. हम्म. Simple remedies, nothing much. Put या. some, fountain over there, some water. Even if you are not putting fountain, you just put a, water over there in a blue mug or anything. That will also work. No worries. Your south area, that is a red, that should be a red color. If you want to, doing some fame, you want to be famous, you want to create your brand. If you're या. not doing anything, just lit a urban lamp over there. If you want to stability, if you want to learn something, put a yellow earthen vase over there in southwest. Put your books हम्म. over there. That will give you, that will ignite your subconscious mind to read those books, to adapt करेक्ट. those qualities. If you have हम्म. a son, you want, your son is learning something new, new technologies, or actually, I'm a technical person, so most of the time he will have the technology. But या. if you want to learn new book or something like the new uh, ideas you want to learn, sit on the west southwest and study over there. Put your books over there. And one major thing I'll tell you, most of the people do are, we earn a lot, but we can't save. यस, वेरी ट्रू. वेरी ट्रू. Look your west southwest direction. अच्छा. If create a clutter free place over there and put one gullak with some money and see ओके. the results and tell me the results. And trust me, do not put any entitlement thing over there. हाँ. So do not agree things, or do not what you can say, plans and all those things. Water, even water is okay, but so do not put plant and all those things over there and see the results in 2 3 months. And west southwest is a very magical place to manifest your wish. I am telling अच्छा. you, this is west southwest is a very magical thing. West is a direction of gains. हम्म. West is derived through the Shani, the Saturn. He is giving राइट. you the gains, the profit. You earn a lot, but if you want profit, you have to look into your West. You have to clean your West. You have to energize your West. See how much gain you are getting. But the fact is that people are, much more concentrated on the north side. They don't want, हम्म. house, west facing house and all those. But trust me, you can say for the businessman, for the leaders, they prefer south and west houses.
It's not that Yeah. there are some certain areas in west and south we are actually, not say we are saying don't put it your house, main door over there. Otherwise, it Yeah. was a fantastic, you can say houses over there. Hmm. So in West Southwest, you put your manifestation in a white paper with black pen and in a present tense. Okay, I am running Ferrari in, these days, and it's a fabulous. Write it down and put it over there and see the results. बस मैं यही यही करने वाली हूँ। आई एम गोइंग That टू is what डू दिस I फॉर told श्योर। you. नहीं, बट आई थिंक Uh, आपने जो जो भी सारे सजेशंस एंड जो भी सारे टिप्स दिए हैं, आई थिंक दे आर वेरी प्रैक्टिकल। मतलब अभी हमने जो डिस्कस करा, ये कोई भी कर सकता है। एंड आई वुड से कि अगर ये करने के बाद रिजल्ट मिलते हैं तो आप रेडी रहिएगा, आपको बहुत सारे फोन कॉल्स और मैसेजेस आने वाले हैं ये एपिसोड देखने के बाद फॉर श्योर। मेरा एक और सवाल है। आपने जैसा कि मेंशन किया कि वास्तु और एस्ट्रोलॉजी वहां पे गोचर चेंज होता है, दोस काइंड ऑफ थिंग्स। तो ये वास्तु और एस्ट्रोलॉजी भी कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है या दोनों साथ में चलते हैं? मतलब वो पर्सन से ऑफ कोर्स रिलेटेड है या कैसे है इनका कनेक्शन? मैंने अपनी डिस्कशन के स्टार्टिंग में भी यही बोला था, इट इज ऑल अबाउट हाउ यू या। मैनिफेस्टिंग it. So astrology is also a way to predict your future, what needs to be done, what needs not to be done. They are also balancing, nine planets, five elements. Vastu is also a way to manage your five elements and nine planets. So the similar way as you are, either you wear a ruby to improve your sun, or you put a brass sun in your east direction. In case, if your sun is weakened, it will reflect in your horoscope also, in your house also. So in that case, what will happen that your house east section will be either cluttered or anti-color or something. You put it over there, you blocked it. Might be you paint it in a black color. So that things will be हम्म। happen. So you राइट। remove it, the remedy will be happen. So the moment your energy will disturb, it will be disturbed in every area. Because in the राइट। house, when you are living in a subconscious world. House is your subconscious world. So whatever you see over there, that is actually हम्म। giving you an imprint, imprint in your in your mind, and you act करेक्ट। accordingly. So one thing I'll tell you a very very accurate example. Most of when my father my father normally used to tell me, IS का बेटा IS होता है, businessman का बेटा businessman. It's a general thing. You या। know why? Because he is seeing everything. No one is telling him every day, but he is seeing every day how it is happening. So, to whom it is actually impacting? The subconscious. You या। understand how to talk, you understand how to be, you understand how what needs to be done, what needs not to be done. So, करेक्ट। where you're living, that is impacting your subconscious mind. And हाँ। that is the thing, that is the reason, you're living your vastu impacts. करेक्ट। और आपने अभी जैसे जो ये सन के बारे में जो चीज बताई, ये यूनिवर्सल है, लाइक इट इज यूनिवर्सल फॉर एवरीबडी? बिकॉज Everybody, everybody. मैंने कई बार काफी लोगों को ये सजेस्ट करते हुए सुना है कि आप वेयर दिस स्टोन और वेयर दैट स्टोन और डू दिस और डू दैट। बट आप जो टिप दे रहे हैं वो डेफिनेटली साउंड्स लाइक इट्स अ यूनिवर्सल थिंग कि ये जो करेगा इट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर एवरीवन। I told you, you just touch the feet of your father. Son will be always हम्म। improvised. If your moon is in a bad shape, love your mother, help her, respect her, help him राइट। in his daily routine. See how moon is डिफरेंस। going to. But what happens, हाँ। people don't do this thing. They या। wear moonstone or pearl and everything. That is the करेक्ट। problem. You don't do या। the meditation. You don't breathe. You don't, focus on your breath. You हम्म। go for all those things. These things are good, and these things are for those people who's not having time. They are doing much more things in their life, and they don't have time to meet every day their family.
they are doing much more things towards society, towards the people, right? So for those Right. people, I understand they cannot go every day to like they are living far away from their mom, dad, and people. Hmm. But Hmm. normally these guys are having a cordial relations with their family. But to improve, to enhance those attributes, we suggest. But for everything, I don't suggest. Frankly speaking, I Yeah. know that a lot of people do suggest, but till the time I think when you go through the process, Yeah. you not only to understand manage the energy, you understand the continuous path of your karma also. You improvise Correct. your karma. Yes, yes. If you are not improvising your karma, if you are not very serious about your karma, anything of this world is not going to save you. Right. Trust me, I have like more than 40 years in my life. It's one thing I learn, understand, and I suggest people. Please focus on your karma. When your karmas are right, everything will be sorted. Vastu will work 100% for you. Tarot, astro, everything will work 100%. Yeah. But if your karmas are not good, I doubt. We give the results, even though on those Of areas course. also, we get the results. But there are repercussions. I have seen it, and to admitting this thing, I don't have any regret, like, and I don't want to say that you know do whatever you in your life, and I'll fix it. Normally, I don't work for those guys. या बिकॉज आई थिंक ये चीज ऐसी है जो हम एवरी डे में हमारे साथ होती है लेकिन हम रियलाइज नहीं कर पाते मतलब कर्मा इज समथिंग दैट इज अ कांस्टेंट साइकिल दैट गोज ऑन तो अब इसको जितना इंसान जितना कॉन्शियसली रियलाइज करेगा और इस चीज पे अपने जैसा कि आपने बोला कि ऑब्वियसली इम्प्रोवाइज करेगा उसके लिए ज्यादा बेटर रहेगा बिकॉज ये एक ऐसी चीज है जो हम एवरीबडी हैज टू गो थ्रू मतलब वहां पे एवरीबडी इज इक्वल कोई फर्क नहीं पड़ रहा है वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम और हाउ मच यू आर अर्निंग it is going to be on the threshold of equality when it comes to karma एंड जितना लोग कॉन्शियस होंगे इस बारे में मुझे लगता है कि उतना बेनिफिशियल रहेगा ये तो वही बात हो जाती है कि अगर आपने अगर कसरत करनी है और आप कसरत करते करते अगर आप साइकिल चलाना सीख लेते तो वो आपके लिए एनहांस करता है आपकी फिटनेस Perfect. पर आप खाली Perfect. रहेंगे कि हम कुछ नहीं करें और हम सिर्फ साइकिल चलाएं तो कुछ काम नहीं होने वाला है ओवरऑल Exactly. ये है तो देर इज नो Exactly. शॉर्टकट बट मैनिफेस्ट करते रहना पड़ेगा एंड कर्मा को इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा ये तो देखो बहुत ही ये टूल्स क्या है कि आपको एनहांस करते हैं, गाइडेंस देते हैं, आपके हाँ सबकॉन्शियस राइट को एलिवेट एंड राइट ऑफ द डे आपको करना पड़ेगा. इफ यू आर नॉट करेक्ट डूइंग, नो वन कैन हेल्प कोई रिजल्ट नहीं है यू. करेक्ट ये बात तो बिल्कुल आपने सही कही है अब हम इस चीज से थोड़ा सा ध्यान हमारे व्यूअर्स का लाना चाहेंगे टू समथिंग मोर इंटरेस्टिंग जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगी मेरे पास यहाँ पे एक किताब है अनकही बातें जो कि विनय जी ने लिखी है आप ये किताब के बारे में प्लीज हमारे दर्शकों को बताएं कि सबसे पहले तो आपको ये बुक लिखने का इंस्पिरेशन कहाँ से आया और ये इनमें इसको मैंने पढ़ी है और इसमें जो पोएट्रीज है जो पोएम्स है वो ऐसी है कि आप इंस्टेंटली कनेक्ट कर जाते हैं कोई भी हो अगर अगर एक स्कूल का बच्चा भी इसे पढ़ेगा ना तो वो इंस्टेंटली कनेक्ट कर पाएगा सो हाउ डिड यू कम अप विद दिस थिंग टू राइट दिस बुक प्लीज टेल अस एक्चुअली मैं पहले तो लाइक ना प्रोज लिखता था. हम्म और किसी ने मुझसे कहा एक मतलब मेरे फादर की बहुत ही कह सकते हैं रिवर्ड पर्सनालिटी थे, तो उन्होंने मुझसे कहा तुम पोइट्री क्यों नहीं लिखते. एंड आई वाज इन 96 और 97, आई वाज इन 9th 8th or 9th I think. Then I ओके started writing poetry. And it is हम्म this book is this book is not meant to be published, frankly speaking. This is my own things and everything was in that way. So, but my wife, so that is what in the starting I have dedicated to her. And राइट because this book is actually my gratitude towards my wife. And I'll say on camera, on record, that she helped me a lot to elevate my lifestyle, my life, my thought process. She forced me to, to get published this book.
And that is what I create the complete collection of my book and just get Yeah. published it. In this book, you will find, I know that there is a love also, there is a dedication to mother also, to father also, to life also, and some point you will find it टूटा हुआ इश्क भी है और समटाइम्स यू विल फाइंड कि जिंदगी कितनी हार्डशिप में है और समटाइम्स यू विल फाइंड कि माँ के ऊपर बहुत लिखा है तो पिता के ऊपर भी कुछ होना चाहिए और देखा जाए तो माँ के ऊपर भी लिखा हुआ है कि श्रद्धा सुमन अर्पित कैसे करूं तुझे नमन Right. so it's just it's a you can say star of my life it's a Hmm. extract of my life my journey you can say Yeah. so I'll say I have a very great journey so far by the God's grace. I have experienced everything in my life, either it's a love, whether it's a broken heart, either it's a marriage, it's a knowledge, spirituality, either it is, travel. I love travel a lot. And I think across the world I have traveled. And I think in India also, 90% states I have traveled across. Some are in list also, like Lakshadweep. So I was Yeah. planning to go Maldives, but now I'll go to Lakshadweep. Lovely. So this book is actually is very near to my heart because a lot of poems. Actually, I have written, in remembrance of a lot of people. मेरे घर का दरवाजा आज भी खुला है तेरे इंतजार में तो जरा Yeah. आके तो देख तेरा तेरा बिस्तर आज भी वैसा ही पड़ा so, क्या so, बात है। those books ऑफ कोर्स normally I used मतलब to recite them. ये ये जो हम जो अपने थॉट्स को जब हम लिखित में करते हैं ना तो एक टाइप ऑफ परमानेंट आइडेंटिटी बन जाती है वो हमारी। तो ये ऐसी Exactly. आइडेंटिटी रखना तो बहुत ही अच्छी मतलब बहुत ही पॉजिटिव चीज होती है। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द बुक। इसे अगर किसी को खरीदना हो तो ये ऑनलाइन अवेलेबल है? बिल्कुल अमेज़न पे है, आप अमेज़न से खरीद सकते हैं इसे। ओके, ऑलराइट। सो मतलब अगर किसी और को खरीदनी हो तो डेफिनेटली गाइस यू ऑल नो वेयर बिल्कुल, टू बाय इट फ्रॉम। एंड ये हमारे सेशन का ऑलमोस्ट एंड आ गया है और आई एम श्योर दैट वी वुड डेफिनेटली वांट टू नो अ लॉट मोर अबाउट ईच टॉपिक इन डिटेल आने वाले सेशंस में। एंड शायद मे बी हम एक सेशन ऐसा भी करें जहाँ पे हमें थोड़ी सी इंस्पिरेशन आपके बेटर हाफ से भी मिल जाए अगर मौका बने तो। बिल्कुल, बट बिल्कुल। बट ये सेशन नॉट ओनली आई वुड से कि नॉट ओनली इंफॉर्मेटिव रहा है बट हमें जो आपने टिप्स और सजेशंस हैं आई थिंक दे विल गो अ वेरी वेरी लॉन्ग वे टू हेल्प एवरीवन हु इज वाचिंग दिस एपिसोड। सो थैंक यू सो मच विनय जी फॉर बीइंग हियर ऑन द शो विद अस टुडे। थैंक यू अमन, थैंक यू फॉर एवरीवन हू इज़ seeing this show. एंड थैंक यू और मैं आशा करती हूँ कि हमारा नेक्स्ट सेशन और भी इंटरेस्टिंग और भी दूसरे टॉपिक्स को एक्सप्लोर डेफिनिटली, करने वाला होगा। बिल्कुल। थैंक थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। So that was Mr. Vinayji for you with his expert advice on Vastu. And to know more, please keep watching Bigger and V Talks. That's me, Komal Seth, signing off. Thank you, bye bye, and have a nice day.